Hello students, welcome back to our channel the Stephens Forensic Academy. So हमारी जो सीरीज चल रही है अपनी यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की, तो उसमें हम एक टॉपिक को और आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डायटम्स एंड देयर फोरेंसिक सिग्निफिकेंस। बेसिकली ये हमारा लाइक शॉर्ट टॉपिक होगा जिसमें हम इसको कवर करेंगे। ऐसे ही हम अपने जो हमारे एविडेंसेस होंगे लाइक सॉइल, हेयर, पेंट, ओके, ग्लास एंड ऑल, ऐसे हम एक एक करके उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर? लाइक इसको, लाइक ये टॉपिक है, इसको हम एक एक वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं बिकॉज लाइक इसका कुछ ज़्यादा इतना लिंक नहीं होता। ओके, लाइक जैसे कि ब्लड की बात करें तो वो उसके लाइक बनेंगे, 4-5 पार्ट बनेंगे, तो लाइक वो थोड़ा एक वीडियो में दिक्कत आएगी जो उसको बनाने में। तो इसलिए हम डायटम्स एंड फोरेंसिक सिग्निफिकेंस, लाइक डायटम्स, बेसिकली डायटम्स की हम बात करेंगे कि डायटम्स क्या होते हैं। ओके, इनका फोरेंसिक साइंस में क्या रोल है। अगर हम डायटम्स की बात करें, डायटम्स क्या होते हैं? डायटम्स वी कैन से आर द unicellular algae. Okay, they are microorganisms which can be seen only through the microscope, and are invisible to the our naked eyes. Okay, clear? सो इसमें लाइक हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायटम्स, फोरेंसिक सिग्निफिकेंस, एक्सट्रैक्शन मेथड, सम केस स्टडीज। ओके, देन अगर हम बात करें कि डायटम्स क्या होते हैं, डायटम्स आधा यूनिसेलुलर क्या होती है, एल्गी होती है। ठीक है, एल्गी आपने पढ़ा होगा, लाइक प्लांट किंगडम में पढ़ा होगा। डायटम क्या होती है, एक यूनिसेलुलर एल्गी होती है जिसमें जो सेल वॉल होती है कौन किसकी बनी होती है, वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की होती है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसकी, ये ओनली ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी होती है, SO2 की बनी होती है, दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दैट इज सिलिशियस स्केलेटन। एंड दैट सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो हमारी सेल वॉल है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रोस्ट्यूल बोलते हैं। जो डायटम्स होते हैं इसको बायोलॉजी का प्रोड्यूसर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड। ओके, इनके पास क्या होगी, क्लोरोफिल होती है, इनके पास क्या होती है, इनके पास अपनी क्लोरोफिल होती है, एंड ये एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। उस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं हम, फोटोसिंथेसिस। ओके, क्या बोलते हैं हम उसको, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। बेसिकली फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है कि द फॉर्मेशन और मेकिंग द फूड विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बाय टेकिंग CO2 एंड क्लोरोफिल इन द लाइक विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ओके, क्लियर? सो आपने लाइक पढ़ा होगा कि CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और अपना भोजन तैयार करते हैं खुद प्लांट्स। क्लियर? एंड जो डायटम्स होते हैं एग्जिस्ट है सिंगल सेल एंड फ्लोक टुगेदर। जो डायटम्स है वैसे तो एक सिंगल सेल की तरह भी एग्जिस्ट कर सकते हो, कॉलोनीज की फॉर्म भी कर सकते हैं। ओके, एंड दे फॉर्म वेरी ब्यूटीफुल कॉलोनीज। ओके, वेरी ब्यूटीफुल कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, ओके, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, जो डायटम से क्लासीफाई किया जाता है ऐसे कि किंगडम जो पोटिस्टा में आएंगे। ओके, डिवीजन इनकी क्राइसोफाइटा होती है, क्लास वेसिलारियोफाइसी होती है, एंड इनके दो ऑर्डर आएंगे, दैट वन आर द सेंट्रेल्स, सेकंड आर द पिनेल्स। ओके, लाइक इनकी सिमेट्री के बेस पे, okay, these are differentiated into two orders. One are the centrales, like they are like a concentric circle, and second are pineal, like which show the radial symmetry. Okay, आपने लाइक सिमेट्री को पढ़ा ही होगा, बाइलेटरल और रेडियल सिमेट्री होती है। तो पिनेल्स एंड सेंट्रल्स आर द बेसिकली टू ऑर्डर्स ऑन विच आर डिवाइडेड ऑन देयर शेप। ओके, शेप ऑफ द डायटम्स। अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ डायटम्स की, जो इनका सेल साइज होता है बेसिकली 22-200 माइक्रोन इन डायमीटर में होगा। सेल वॉल आपको मैं पहले बताया कि किसकी बनी होती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, SiO2 की बनी होती है। ओनली ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑन द अर्थ दैट आर that the cell of that organism made up of only SiO2, that is silicon dioxide। क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनमें लाइक 3 to 5 थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स होती हैं। फाइटोपिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं इनके पास, क्लोरोफिल A एंड C एंड कैरोटीनॉइड्स। देन रिप्रोडक्शन अगर हम बात करें, ये सिंगल सिंपल सेल डिवीजन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इकोलॉजिकल रिप्रोड्यूसिव डिपॉजिट, दैट इज डायटमेशियस अर्थ। ओके, डायटमेशियस अर्थ क्या होती है, हम फॉसल, हम कह सकते हैं कि फॉसल लाइक जब डायटम काफ़ी लंबे समय तक, like after so many years they are just deposited on the in like underside the, we can say, sea welt, and that they produce the diatomaceous earth. And the common genre we can like see that is the skeletonema and pseudonychia. Okay, and Catoshiros. Okay, these are the some like common genre of the, we can say, of diatoms. Clear? सो अगर हम बात करें इनकी सम करेक्टरिस्टिक्स की, ओके, लाइक करेक्टरिस्टिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इनको। जो इनकी सेल वॉल लाइक होता है ना, एक फ्रोस्ट्यूल होता है, वो लाइक ऐसे बना होता है इनका,
ये लाइक जैसे कप होते हैं, लाइक दो अगर हम प्लेट को हम जाके दो पैकेट डिश को आपस में लाइक जोड़ दें, है ना, तो वैसे इनकी दो फ्रस्टूल बनते हैं मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। ओके, and due to these silicon dioxide they form the diatomaceous earth। okay, this इसकी वजह से क्या बनता है, diatomaceous earth को ये बनाते हैं। okay, these are the only organism on the earth whose cell wall is made up of silica। the formation of diatomaceous earth already discussed, and the silica skeleton do not really decay and can be detected even heavily decomposed bodies। okay, that's why they are very important in the forensic science, because they can be like even detected in the heavily decomposed bodies। clear। अगर हम बात करें कि फोरेंसिक्स में डायटम्स का क्या रोल है, अगर हम बात करें तो लेट्स सी, जो डायटम्स होते हैं वो फोरेंसिक में क्या रोल प्ले करते हैं। देखो, फोरेंसिक में क्या आती है, दो चीज़ें आती हैं। वन होती है कि पोस्टमार्टम ड्राउनिंग होती है। ओके, ड्राउनिंग के केस में ये काम आएंगे। ओके, जब बंदा लाइक डूब के मरा हो, ठीक है। एक होती है एंटीमोर्टम ड्राउनिंग, एक क्या होती है एंटीमोर्टम ड्राउनिंग। पोस्टमार्टम ड्राउनिंग क्या होती है कि बंदे को पहले मार दिया है और उसके बाद उसको लाइक वाटर पूल में उसको लाइक उसकी बॉडी को, ठीक है, लाइक वी कैन से फेंक दिया है। ओके, एंटीमोर्टम ड्राउनिंग क्या होते हैं, लाइक के बंदा लाइक अभी जीवित था और उसको लाइक पहले ही मरने से पहले ही उसको वाटर बॉडी में लाइक फेंक दिया है। ओके, उसकी बॉडी को। तो हम वी कैन ascertain the postmortem drowning and antemortem drowning in the forensics with the help of the diatoms। ओके, क्लियर। तो कैसे इसका एप्लीकेशन क्या है, if we see here, if there are antibody drowning means the person who are not dead and get drowned in the water, okay, before the death of the person, then we can say that the circulation is not stop on that time, and we can say that diatoms enter into the circulatory system, systematic system में चला गया, and then it will enter the lungs, and due to that it will like pass through whole the body and can be deposited in the our longer bones such as femur, okay, femur and like sternum bone। clear। if there is a postmortem drowning, we can say that the diatoms just only we can say retain in the lungs, okay, lungs of the person, because the circulatory system is now stopped, okay, because the person is dead, so they can't be like enter in our body system, so okay, so we can ascertain the antemortem drowning or postmortem drowning। okay, so to establish the correlation between diatoms, the extraction from the organ is simple obtained from the drowning site। these also can corroborate the investigative evidence in the accidental determination। like in this diagram, if we see that water entry post-mortem, okay, in this if you can see that there is a no record of diatoms in the long bone। okay, यहाँ पे कोई long bone में कोई भी इसका रिकॉर्ड नहीं मिला, only lungs में इनके diatoms मिले। but if there is antemortem drowning, okay, this is the case of antemortem drowning। in this the diatoms inhaled by the person and it will enter the circulatory system of that person and pass through the long bone, okay, pass through the circulatory system and enter into the long bone such as femur or sternum bone, okay, and then we have to extract the diatoms from that bones। okay, so in forensic science, basically if we want to examine the diatoms, first of all we have to like extract the diatoms from the system of the person, okay, of the diseased, we can say। like there are two or three type of method we use. basically we use here two method, one is the this method, that is the we can say acid digestion method, and second is the enzymatic method, okay, and Solon 350 method is also a method of extraction, but this was experiment, okay, this was experiment done by some scientist on the freshwater and seawater diatoms, okay, so these are the two methods under the category of acid digestion method, okay, this is the category of acid digestion method, and this enzymatic method is a very we can say best method, but the limitation is that this is not be affordable, okay, ये affordable नहीं होता, like इसकी cost काफ़ी ज़्यादा होती है, okay, due to some biological enzymes की वजह से, okay। So if we want to examine the diatoms, first of all we have to extract the diatoms from the system, okay, so the simple process is that we have to first of all we have to collect the sample from the victim, okay, then the intact femur bone has to be removed during the autopsy, and we have to collect the bone marrow around 50 gram, okay, around 50 gram we have to collect the bone marrow, then we have to add the 50 ml of nitric acid,
okay, and then we have to boil the suspension, whole suspension, approximately for 48 hours. Then the suspension has to be centrifuged and discard the supernatant and the lower part, okay, like this is the test tube, okay, the supernatant we have to discard. So there here is a brown color, like we can say substance will formed, okay. So that substance we have to analyze under the microscope, and which will contain the diatom, okay. Then we have to like match with the diatoms, we can say recovered from the site, okay. जो हमें साइट से रिकवर हुए हैं एंड जो हमारे विक्टिम से रिकवर हुए हैं तो उनको हम मैच करेंगे. इफ दे like are matched, then we can say that the person is drowned in that site. Clear? So next method is the sulfuric acid method. So this is the best method, that in this we have to remove first of all the calcareous substance to prevent the formation of gypsum crystal, okay. And then the centrifuge the sample, then add sulfuric acid, same that, then we have to add the potassium dichromate so that the solution becomes saturated. Then the stand for 24 hours, then again we have to like centrifuge the hold suspension, and then we have to discard the supernatant, okay, and observe under the microscope. Clear? So next method is the Solon 350 method. Solon 350 method is just experiment in which the Sidari et al. Done the experiment on the fresh water and the sea water, okay, diatoms, and they saw, they just observed that the suspension under in the sea water is very, we can say, sensitive to the Solon 350, okay, and get dissolved in the this substance, that is Solon 350, okay. So this was just experiment. Next is the enzymatic method, okay. So this method is reliable and applicable to qualitative and quantitative diatom analysis, was evaluated by the Diatom et al. So in 1994, so in the enzymes we can have to just take the tissue, and we have to first of all treat with the some enzymes such as proteinase K, okay, to dissolve the proteinaceous compound. And then we have to treat with the chemical treatment, okay. We have to give the chemical treatment. First of all we have to treat the sample with the proteinase K enzyme, then the chemical treatment. Then the enzymatic method was considered more convenient terms in rapidity, safety, and environmental protection, okay. But this method is, we can say, not affordable for all. So if we say about the electron microscopy, if we want to study the structure of these, we can say, the diatoms, so we have the two type of electron microscopy. One is the transmission electron microscope, second is the scanning electron microscope, okay. So to see the very delicate details of the diatoms, okay, delicate means the internal structure we have to, अगर हम study करेंगे, then we have to use the transmission electron microscope. And if we like study the gross morphology, or we can say topography of the diatom, then we will use the scanning electron microscope, because in the under scanning electron microscope we can just examine the external part of the diatom. Clear? Then the to study the like a detail of frustules, we can see the, we can use that transmission electron microscope, okay. Clear? And scanning electron microscope से हम इसके internal और external पर दोनों को हम study कर सकते हैं. Clear? तो नेक्स्ट अगर हम केस स्टडी की बात करें तो सिंपल सा एक केस है, लाइक देयर वाज लेडी ऑफ 23 ईयर ओल्ड, ओके, रिकवर्ड फ्रॉम विलेज वेल. सो देयर वाज नो साइन ऑफ इंजरी, okay. So father of the lady was claimed that her daughter was being murdered or then thrown into the well to prove the case of suicide, okay. Then the nitric acid extraction was done from the clavicle or femur bone, okay. Then the three type of diatom species was discovered, and the same three diatom species were detected from the water of the sample in the well. So it was show that it was a case of drowning, okay. So their next case was their 34-year-old lady was recovered from the canal, and the sign of head and neck injury was there. So when the nitric acid digestion will take place, so there was seen that the diatom species, okay, were detected in the water sample from the where the body was found, but there is no like a species of any diatom found inside the body. So this caused the death was attributed to the region other than drowning, okay. So we can say that the person, that lady was not like dead by the drowning, okay. This was a simple case. So that was all about the these diatoms, okay. So diatom play a very important role in the forensic science. Clear? तो ये था हमारा लाइक छोटा सा सेशन ऑन द डाइटम्स. तो हमने एक टॉपिक को कवर किया है डाइटम्स का. तो नेक्स्ट हम अपनी इसके साथ ही कंटिन्यू करेंगे हमारी फर्दर सीरीज़ को, और साथ में हम लाइक और सीरीज भी हम साथ में लेकर आएंगे, और कुछ केस को भी हम स्टडी करेंगे विद द रेफरेंस ऑफ द यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस के साथ, ओके. तो अगर आपको लाइक इसका भी अगर पीडीएफ का एक्सेस चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना होगा, ओके. अदरवाइज आपको पीडीएफ का एक्सेस नहीं मिलेगा कहीं से भी.
clear. For any further queries you can like contact me personally, okay, on my WhatsApp number or on LinkedIn account. Okay, so stay safe. Okay.